Hi everybody, this is our section of pathology and we are discussing breast pathology. Remember, the important question in breast pathology is the pre-malignant lesions of breast or the fibrocystic lesions. See, fibrocystic lesions means what? In the standard books, what they are writing is that fibrocystic lesions are variety of age-related proliferative epithelial breast lesions. Okay, uh, but then pre-malignant. Okay, so pre-malignant means what? That they will further lead to malignancy. Okay, so but now we don't call fibrocystic lesions as pre-malignant lesions because हर fibrocystic disease ज़रूरी नहीं है कि malignancy cause करेगा. So if you are getting a question on fibrocystic lesions of breast, what is the ideal definition? So many age related, so many proliferative, and so many epithelial breast lesions. Okay, so fibrocystic lesions are age related, proliferative, epithelial breast lesions. Okay, so these एज रिलेटेड proliferative and epithelial breast lesions, इनके बारे में आज हमें डिटेल में पढ़ना है. एंड दिस वाज द डेफिनेशन दैट एज रिलेटेड proliferative and epithelial breast lesion is called fibrocystic lesion of breast. Okay, see, इटियोलॉजी की अगर हम बात करें कि व्हाट कैन बी द प्रोबेबल इटियोलॉजी, सो उसके अंदर खास करके देखा यह गया है दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट risk factor which has been associated is the age group between 25 to 50 years. Okay, and a dramatic decline in the incidences after menopause due to reduced estrogenic stimulation has been observed. So the probable etiology which comes out from these two facts is one is your estrogen and other one is your age group between 25 to 50 years of age. Okay, so 25 to 50 years of age and estrogen, these are the two probable etiologies which are responsible for causing the fibrocystic disease of breast. Okay, so first heading is always definition and next is your etiology. The third heading which we focus on is our gross features. So what are the gross features which you will see on the fibrocystic disease of breast? Remember, firstly it is bilaterally produced. ठीक है, and they have got, they are bilateral and they have got a lumpy bumpy appearance. Okay, lumpy bumpy appearance rather than a palpable mass inside the breast. मतलब lumpy bumpy means what? There will be a lump formation. Now for example, this is a normal breast, so the breast over here will be a bit like lump. Okay, so lumpy breast will be there. Okay, so lumpy bumpy appearance will be there on the gross. Okay, एंड और क्या क्या ग्रॉस फीचर्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. बाय द टाइम वी विल बी डिस्कसिंग दी this thing, the microscopic types of fibrocystic lesions of breast. Okay, so for the time being, just remember that there are two things which we have discussed in gross. One, that is this is usually bilateral. Okay, this is not unilateral, this is usually bilateral. And then there is a lumpy bumpy breasts. Okay, lumpy breast or lumpy bumpy breast rather than a palpable mass. Okay, now on the basis of microscopy, if you see on the on the microscopic basis, we can divide fibrocystic lesions into three parts. One is your non-proliferative fibrocystic change, then proliferative fibrocystic change without atypia. What does this mean? I'll tell you. And the third one is proliferative fibrocystic change with atypia. Atypia means एटिपिकल न्यूक्लियस. टिपिकल और एटिपिकल वर्ड का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. ठीक है, टिपिकल मतलब जो आम जैसे नॉर्मली दिखता है, एटिपिकल इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट. ओके, सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच विल बी डिस्कसिंग, बट वन थिंग विच आई एम टेलिंग यू हेयर, विच आई एम making you aware of now this point of time, is that non-proliferative fibrocystic, proliferative without atypia and proliferative with atypia, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो there is an increased risk of malignancy. That means the most malignant is proliferative fibrocystic change with atypia. Okay, so माइक्रोस्कोपी में हमें एक एक को ही अच्छे से डिस्कस करना है. एंड वंस वी विल बी डिस्कसिंग एक एक अच्छे से, this will be our end of fibrocystic lesions. Okay, so first point which we'll be discussing is non-proliferative fibrocystic change. Okay, non-proliferative fibrocystic change. Non-proliferative fibrocystic change क्या होता है? Remember, this is a physiological change.
ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ physiological change. Non-proliferative fibrocystic, it is a physiological change. What you are going to see under this, you will see cyst formation, you will see fibrosis, and you will see adenosis. What does this mean? Cyst and fibrosis and adenosis का क्या मतलब होता है? देखिए, if you can see, there's बहुत सारा fibers which you can see over here. So this is fibrosis. What is adenosis? Adena means gland formation. So there are numerous glands which are being formed. Adenosis clear, fibrosis clear. Next is your cyst formation. Now what does this mean, that cyst formation? देखो cyst का कुछ भी नहीं है from जो आपकी फाइब्रोसिस हो रही है ना, ये जितने भी आपको फाइब्रोसिस दिख रही है, उसकी वजह से देर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट. ओके, उसकी वजह से क्या होता है, दे आर गोइंग टू कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, जिसकी वजह से द अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज रिड्यूस्ड एंड दैट फर्दर लीड्स टू ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन. देखो, अगर आप नहीं समझ पा रहे, मैं आपको एक डायग्राम से इजीली बताता हूँ ना. फॉर एग्जांपल, दिस वाज अ कलेक्टिंग डक्ट ल्यूमन, नॉर्मल कलेक्टिंग डक्ट. ओके, नॉर्मल कलेक्टिंग डक्ट. अब नॉर्मल कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो गया, यहाँ पर साइड में आ गए फाइबर्स बहुत सारे, एंड फाइबर्स दे हैव स्टार्टेड कंप्रेसिंग द ल्यूमन. ओके, सो द ल्यूमन हैज़ नाउ compressed. Now because the lumen has now compressed, the hormones will say कि भैया ब्रेस्ट में से जो मिल्क है वो कम निकल रहा है. तो अब क्या होता है, जो ये ग्लैंड्स होते हैं इनका प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब नाउ दीज ग्लैंड्स आर गोइंग टू गेट प्रोलिफरेटेड. ओके, सो देयर विल बी ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन एंड दैट लीड्स टू सिस्ट फॉर्मेशन, जिसको आप आम भाषा में गांठ का नाम देते हैं. Okay, cyst formation. So there are three features which are peculiar for non-proliferative fibrocystic lesion. One is your cyst formation, other one is your fibrosis, and other one is your adenosis. Okay, so this was fibrosis, this was adenosis, numerous gland formation, and there was something known as cyst formation. Okay, so I think that it is very much clear. Now I'll just revise that cyst में क्या होता है. Cysts result from fibrosis, which cause the obstruction of the collecting duct, which is followed by the glandular proliferation. Okay, so that's it, right? And these cysts, they may undergo apocrine metaplasia. Apocrine metaplasia in cysts के अंदर हो सकता है. Actually, the collecting ducts, remember, the collecting ducts के जो glands होते हैं, collecting ducts के जो glands होते हैं, they are just to secrete. Okay, they are just for the secretion purpose. ठीक है, लेकिन वहाँ पर एपोक्राइन मेटाप्लेशिया हो सकता है. मतलब जो वो सिक्रीटरी पर्पस के लिए ग्लैंड्स थे, अब वो एपोक्राइन हो सकते हैं. What does this apocrine means? Apocrine means that now these glands, they are going to apocrine का मतलब होता है the apex of the cell is going to get cut and the secretions will be released. Now apocrine metaplasia, and any metaplasia that is a pre-malignant. That is why they can become malignant. ठीक है, ये जो non-proliferative fibrocystic lesions हैं, they can become malignant. Okay, but remember one thing, collecting ducts normally जो glands होते हैं, these are not apocrine, although they are secreting their secretions, they are not apocrine. मतलब सेल का apex नहीं टूटेगा, लेकिन they can undergo apocrine metaplasia, and once they are going apocrine metaplasia, that is pre-malignant, कोई भी metaplasia, and then this further can lead to metaplasia. Okay, sorry, they further can lead to malignancy. Okay, fibrosis, I told you कि जो भी इंटरलोब्युलर एंड इंट्रालोब्युलर स्पेसेस हैं वहाँ पर फाइबर्स आ जाएंगे. एडिनोसिस मीन्स व्हाट? एडिनोसिस मीन्स ग्लैंड फॉर्मेशन. एक्चुअली you have something known as TDLU. What is TDLU? Terminal duct and lobule unit. You know that if I talk for the normal breast anatomy, so these are the larger ducts. Larger ducts के बाद में ये आते हैं टर्मिनल डक्ट्स. ठीक है, टर्मिनल डक्ट्स एंड ये लॉब्यूल होते हैं. सो द टर्मिनल डक्ट एंड द लॉब्यूल यूनिट इज नॉन एज TDLU. ओके, सो जो लॉब्यूलर यूनिट्स हैं उनका प्रोलिफरेशन होने लग जाएगा. मतलब ये ऐसे 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 ऐसे. दिस इज एडेनोसिस. ओके, दिस इज एडेनोसिस, एंड दिस इज अ फिजियोलॉजिकल चेंज. इट occurs in pregnancy and lactation also.
Okay, so what is the most important thing which you must remember when you are writing the non-proliferative fibrocystic change, that it is a physiological change? Yes. What are the microscopic features? There will be cyst formation, adenosis and fibrosis. Cyst formation means फाइब्रोसिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है कलेक्टिंग डक्ट की, जिसकी वजह से ग्लैंड्स प्रोलिफरेट करेंगे, एंड वंस द ग्लैंड्स आर प्रोलिफरेटिंग, यू नो व्हाट दैट द ग्लैंड्स में अंडरगो एपोक्राइन मेटाप्लेशिया. देखिए ये कैसे यहाँ पर एपोक्राइन मेटाप्लेशिया हो रहा है. ओके, एपोक्राइन मेटाप्लेशिया होता है, ये सेल यहाँ पर ऐसे बन गया, अब थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे यहाँ सेल यहाँ से टूट जाएगा, तो दिस इज एपोक्राइन. ओके, एंड मेटाप्लेशिया हो रखा है, दैट इज अ प्री मैलिग्नेंट लीजन एंड दैट कैन लीड टू मैलिग्नेंसी. नेक्स्ट इज योर फाइब्रोसिस इन द in the interlobular and intralobular spaces, and then next is your adenosis. What is adenosis? You have this TDLU unit, and TDLU के lobule का proliferation होने लगता है. Okay, so obviously these changes you can see on gross also, right? Cyst formation आप gross पे देख सकते हैं, fibrosis आप देख सकते हैं because there will be difficulty in movement, and the adenosis you can also see, right? Adenosis या हाइपर प्रोलिफरेटिव आपको जो है ना ब्रेस्ट दिखेगी ऑन एक्सरेज एंड एवरीथिंग, राइट? सो दिस इज द डायग्राम विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. See, after that we are supposed to discuss the proliferative fibrocystic disease without ATP and with ATP, which will be following in the subsequent videos. Thank you.